हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स स्पीक इंग्लिश। कहते हैं कि लहरों को डरकर नौका कभी पार नहीं होता, लहरों को डरकर नौका कभी पार नहीं होता और कोशिश करने वालों का कभी हार नहीं होता। यस फ्रेंड्स, सो हाउ वी कैन स्पीक इंग्लिश? बाय ट्राइंग, बाय कंटिन्यूअस गिविंग एफर्ट, बाय हार्ड वर्क, बाय डेडिकेशन. This is essential, but along with that, we have to do smart work. Yes, friends. Always remember, along with the proper plan, proper dedication, proper hard work, we have to do a smart work. We have to build a proper plan. So let's know what is plan. Listening. आपको इंग्लिश सुनना पड़ेगा. Without listening, you can't learn English. You can't learn any language without listening. The basic, the primary things to speak English is to listen. आपको सुनना पड़ेगा. आप YouTube से सुन सकते हो, आप किसी ऐप से सुन सकते हो, आप कोई FM से सुन सकते हो. ओके, यू कैन लिसन फ्रॉम सो मेनी थिंग्स. आप इंटरनेट से सुन सकते हो. सो सुनिए, लिसन इंग्लिश केयरफुली. यू कैन लिसन टू सम फॉरेन स्पीकर. लिसन. लिसनिंग इज वेरी एसेंशियल फॉर स्पीकिंग. देन स्पीकिंग, आपको बोलना पड़ेगा. अगर आप तैरना चाहते हैं, इफ यू नो हाउ टू स्विम, यू हैव टू जंप इनटू द रिवर. आपको नदी में कूदना पड़ेगा, आपको पानी में पैर रखना पड़ेगा. सो अगर आप चाहते हैं कि मैं सीख जाऊं हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, यू हैव टू स्पीक मोर एंड मोर. यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर. जितना ज़्यादा बोलोगे, जितना ज़्यादा सुनोगे, उतना ज़्यादा जल्दी से आप अंग्रेजी सीख पाओगे. रीडिंग, गाइज, speaking English is all about pronunciation. How are you pronunciation? By using your this muscle. Okay, so you can know, you can learn how to pronunciate by reading. Actually, by reading you can improve your flow. See, if I speak English like there is a school and I am going to market and I fall down on the road. कैसा होता है? अगर आप के साथ ऐसा होता है, अगर आप बोलने में अटक जाते हैं, रीडिंग, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रीडिंग. रीड केयरफुली, रीड डेली, रीड लाउडली फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स, फॉर एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स a day. If you give 30 minutes for reading a day, you will see a magnificent change in your fluency, in your flow. Okay, so reading is very essential. Correct. Then writing. Guys, writing will build a vocab. Like if you learn some new words and you use the words while writing, then within few times you can use the words while speaking. So writing is very essential. Okay, usually by writing you can grab lots of vocabs, lots of phrases, lots of new things. So writing is very essential. Guys, then come to number 5, learning new words. Yes, learning new words is a very vital thing to speak English. अगर आप नया शब्द नहीं सीखोगे तो how you can learn spoken English, how you can speak fluently? You will definitely stuck. Okay, क्या आप बोलते बोलते अटक जाते हो? क्या आप ब्लैंक हो जाते हो कि अब मुझे क्या बोलना है? What word I should use? Then only one solution: learn new words. Daily at least 3 or 4. At least learn 4 new words daily. Then come to tense. To speak English correctly, to represent your thought in a correct way, you need to know what is tense, and tense is very essential. Okay, then come to phrases. कहीं ऐसा ना हो कि मैं बर्बाद हो जाऊं, तुम मुझे पैसा दो वरना मैं तुझे मार डालूंगा, तुम जब तक नहीं मानोगे मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा. Okay, this type of sentence we can make in English by using some special phrases. So these called phrases. So here friends, we have 7 golden rule to speak English fluently. 1 is listening, 2nd is speaking, 3rd is reading, 4th is writing, 5th is learning some new words, 6th is tense, and 7th is phrases. So guys, do work. आपको सब में थोड़ा थोड़ा काम करना है. In one day, give 2 hours behind it. 15 minutes listening, 15 minutes speaking, 15 minutes reading, 15 minutes writing,
and sometimes to learning new words, sometimes to tense, and sometimes to phrases. That's it. But do this all work regular way, daily. Maintain a regularity and consistency will make you fluent. Thank you so much, guys. Hope you like the videos, and if you have some doubt regarding speaking English, then please let me know in the comment box. Okay, drop your doubt in the comment, and please subscribe the channel. Thank you so much.